everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today we have got the following content of list. So let's discuss. The first topic says about live streaming of Supreme Court proceedings. So यहाँ पे एक बोला क्या गया है कि like live streaming online RTI portal SC takes big steps on transparency. तो हम लोग जानते हैं कि like today every process of the Supreme Court is very much of transparent. ठीक है, आज तक हम लोग को इवन इन इंटरनेट इफ यू सर्च सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का वो बस ऊपर का जो पिक्चर है 10, ये जो पिक्चर है यही पिक्चर देखने को मिलते हैं हम लोग को, अंदर का चीज आज तक हम लोग नहीं देखे हैं. दिस इज बिकॉज वी हैव सीन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन सुप्रीम कोर्ट. इवन इफ आई सी अबाउट द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, द ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ द जजेस व्हिच इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कॉलेजियम सिस्टम, वो भी बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है. So this is also a fact and therefore it has criticizations throughout the country. तो यहाँ पे अभी क्या बोला गया है कि like recently the Supreme Court decided to live stream its proceeding in crucial constitutional bench cases that will be heard from 27 September. 27 September से एक bench बैठेंगे जो decide करेंगे on the crucial proceedings that is to be made live. Okay, so positive systematic corrections have been made possible due to broadcast of court proceedings. तो आजकल हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना पेंडेमिक जो हाई कोर्ट के केसेस होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के केसेस होते हैं, तो वो आजकल फ्रीली यूट्यूब में मिलता है हम लोग को. ठीक है, तो वहां पे देख सकते हैं हम लोग की प्रोसीडिंग्स कैसे चलता है. तो आज सुप्रीम कोर्ट में ये सब होने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर डायरेक्टली pleading them. Okay, so today if you see about the background of this case, तो देखो, the Supreme Court in a case which is known as Swapnil Tripathi versus Supreme Court of India 2018 had ruled in favor of opening up the apex court through live streaming, and it has held that live streaming proceedings are part of right to access justice, and that is under kitna article hai of fundamental right? It is under article 21. So that is protection of life and personal liberty. So live streaming proceedings are a part of what? Right to access justice. Even if I see about the Gujarat High Court, who was the first High Court to live stream court proceedings, followed by whom? The Karnataka High Court. उसके बाद बहुत सारे हाई कोर्ट्स आ गए. Currently, the Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Orissa, Patna High Courts live stream their proceedings. Okay, and Allahabad High Court of UP is considering the power to doing the same. तो आज हम लोग देखते हैं कि गुजरात के अलावा हम लोग कर्नाटका को देखते हैं, झारखंड को देखते हैं, मध्य प्रदेश को देखते हैं, उड़ीसा को देखते हैं, पटना हाई कोर्ट को देखते हैं, जो कि लाइव स्ट्रीमिंग्स में चलता है. ओके, सो देयरफॉर द वेरी पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया व्हिच इज डायरेक्टली अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इन्होंने भी बोला, इन्होंने भी एक रिकमेंडेशन डाला था कि लाइव स्ट्रीमिंग्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड और इंट्रोड्यूस्ड एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाज कोर्ट and only in constituent bench cases. Okay, and the success of this project will determine whether or not live streaming should be introduced in all courts pan India. तो ये बोला गया यहाँ इन लोग के द्वारा. Also it says about the decongestions of the courts and improve physical access to the courts, and therefore the he directly cited his support on the recommendations put forwarded. So in this set of guidelines that is suggested by the AG, that is the Attorney General, which was approved by the Supreme Court, सो यहां पे अटॉर्नी जनरल के द्वारा भी बोला गया है कि देयर शुड बी सम ऑफ द लिमिटेशंस. ऐसा नहीं कि आप लोग सब केसेस लाइव स्ट्रीमिंग कीजिए. सो देयर शुड बी सम ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस व्हिच डायरेक्टली withholds the broadcastings and also not permit in any cases involving matrimonial matters involving the interest of the juveniles, matters of national security, okay, matters which directly says about special protection to some of the vulnerable groups. Okay, also to protect confidential or sensitive information, and you can see about the matters where publicity would be antithetical to the administration of justice, and where also we can see that cases may provoke the sentiments and arouse the passion amongst communities. So इसीलिए ये सब हम लोग देख के हम लोग को उसी केसेस पे ऑनलाइन जाना चाहिए या लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहिए जिस केसेस में देयर इज नो सिक्योरिटी कंसर्न्स, देयर इज नो डिसऑल्टरेशंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ अ रेस्पेक्टिव सोसाइटी. तो आज मैं अगर दूसरा कंट्रीज का सिनेरियो देखूं,
तो यूएस में क्या है? Since 1955, audio recording and transcripts of oral arguments has been allowed. Okay. ऑस्ट्रेलिया का देखो, लाइव और डिलेड ब्रॉडकास्टिंग इज अलाउड. ओके. ब्राजील, सिंस 2002, लाइव वीडियो एंड ऑडियो ब्रॉडकास्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स ये अलाउड है. कनाडा, proceedings are broadcast live. South Africa, Supreme Court of South Africa has allowed the media to broadcast court proceedings in criminal matters. And this is directly an extension to the right of freedom of expression. UK का देखो तो, after 2005, proceedings are broadcasted live with a 1-minute delay on the court's website. But coverage can be withdrawn in sensitive appeals. तो दो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे countries, the developed countries, some of the countries which directly go for such number of broadcasting, ये बहुत आजकल कॉमन है. तो हम लोग भी उसी के मार्ग पे चल रहे हैं आज. लेकिन यहाँ पे हम लोग का दो, we have got various concerns, because today if you see the video clips of proceedings from Indian courts that are already there on YouTube and other social media platforms with sensational titles and little context are leading to the spread of misinformation. Also, we could see that the commercial agreements with broadcasters are also concerning. And also the unauthorized reproduction of live streaming videos in another cause for concern, as its regulation will be very difficult at the government's end. So what can be the way forward with this? See, the broadcasting court proceeding is a step in the direction of transparency, और ये होना चाहिए, लाना चाहिए. Also, it is a greater access to the justice system coming under Article 21. Also, we could see about citizens having the right to information and technology exists to make matters of constitutional and national importance available for public viewership. So if a live stream of the top court proceeding is not possible, alternatively, video recording on the proceedings should be allowed. And we could see, or we could set a set of guidelines which must be framed to ensure that the video titles and descriptions are not misleading and convey some of the accurate information only. और जो ये सब नहीं मानते हैं, strict punishment or penalty must be attached with the unauthorized reproduction of live streaming of videos. Okay, तो यहाँ ये सब बोला गया है, ये सब डिस्कस करेंगे. सुप्रीम कोर्ट कब? We can see about that 27 सितंबर से ये शुरू होने वाला है. तो अभी देखते हैं फिलहाल कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करते हैं. चलो नेक्स्ट पे आते हैं. Impact of drug mafia on youth. See, today in this country of India, we are all faced with this drug menace. Okay, and this drug menace in India is very much spreading fast among the youth of India. Because agar मैं बोलूं, India is directly sandwiched between two large opium producing regions of the world. One is the Golden Triangle on the one side, and the other side we have got the Golden Crescent. तो मैं अगर यहाँ पे अपना भारत माता को ड्रॉ कर लूं, जस्ट अ रफ स्केच, तो गोल्डन ट्रायंगल कहां से आता है? दिस इज द एरिया. और गोल्डन क्रेसेंट, दिस इज द एरिया. ओके, तो यहाँ पे गोल्डन क्रेसेंट में कौन सा कंट्रीज आता है? ईरान, अफगानिस्तान एज वेल एज पाकिस्तान. और गोल्डन ट्रायंगल में कौन सा आता है? सपोजिटली मान लो वियतनाम, लाओस और थाईलैंड, एंड इवन बर्मा, बिकॉज बर्मा शेयर्स अ क्लोज बाउंड्री विथ द कंट्री ऑफ इंडिया. तो वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, बर्मा, दिस आर ऑल अ पार्ट ऑफ गोल्डन ट्रायंगल. तो इसी के लिए हम लोग को यहां से भी हम लोग का ओपियम आता है, ड्रग्स आता है, यहां से भी आते हैं. And therefore, we can see that Punjab region peoples or Punjab youths are very much affected with this opium and drug trade. और यहाँ पे हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का देख लो, मणिपुर से घुसते हैं, तो मणिपुर के लोग बहुत ज्यादा ड्रग्स करते हैं. So therefore, today if you see that according to the World Drugs Report of 2021, prescription drugs and their ingredients are being increasingly diverted for recreational use in India. Okay, so we see that around 5 crore Indians reported to have used cannabis as well as opioids at time of the survey. When we went for the survey, that is the All India Institute of Medical Sciences went for the survey of the magnitude of the substance used in the country of India. Okay, and it has been estimated that around 8.5 lakh people is directly injecting drugs on their body. And of the total cases estimated by the report, more than half of them are contributed to the states like Punjab, Assam, Delhi, Haryana, Manipur, Mizoram, Sikkim. तो मैंने बोला क्यों? Because it's closely on the proximity of the Golden Triangle as well as the Golden Crescent. So though the government of India is directly trying its level best, okay, to tackle such number of drugs trade, Narcotics Control Bureau, okay, so काम करते हैं, it directly coordinates with various international organizations for sharing information and intelligence to combat the transnational drug trafficking. Okay,
Also, we have got various number of coordinations between the Ministry of Home Affairs as well as the various law enforcement agencies. ओके तो यहाँ पे अभी बोला गया है कि ये सो मोटो एक केस लिया गया है किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं कि लाइक सो मोटो क्या है पता है सबको? सो मोटो इज डायरेक्टली अ लैटिन टर्म व्हिच मींस ऑन इट्स ओन मोशन. दैट इज व्हेन अ कोर्ट टेक्स सो मोटो कॉग्निजेंस ऑफ एन इशू, इट इंस्टीट्यूट अ केस ऑन इट्स ओन अकॉर्ड बाय टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ अ पब्लिक इशू. ओके तो अभी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि चलो हम लोग ही शुरू कर देते हैं. ये टैकल करना बहुत जरूरी है बिकॉज इट इज डायरेक्टली किलिंग द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, दैट इज द यूथ. Okay, so we can see that the suo moto case has been taken off. Okay, several high courts across the country have in the past taken cognizance of the shadow cast by the drug mafia and the society. Okay, 2020 में मद्रास हाई कोर्ट ने तो बोल भी दिया था कि हाईलाइटेड द परवेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रग पेडलर्स इन स्कूल, कॉलेज एंड अदर पब्लिक प्लेस. केरला हाई कोर्ट ने भी बोला गया था तो एस्टैब्लिश कैंपस पुलिस. एक स्कूल के कैंपस के अंदर, कॉलेज के कैंपस के अंदर, यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर पुलिस डालो. पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज बीन फॉर अ टाइम हियरिंग अ केस ऑन द रैम्पेंट ड्रग प्रॉब्लम इन पंजाब. तो ये सब चल रहा है. तो अभी इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये एक सो मोटो केस लिया गया है सो दैट वी कुड डायरेक्टली टैकल द मैनेस ऑफ दिस ड्रग्स. ओके तो इसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा हम लोग का प्रोजेक्ट शुरू है. ठीक है, इवन यू कैन सी प्रोजेक्ट सनराइज. फिर हम लोग का जो एक मेन एक्ट है विच कैटल्स सच नंबर ऑफ और विच प्रोहिबिट्स पर्सन फ्रॉम पोजेसिंग सच नंबर ऑफ ड्रग्स, तो वो है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, दैट इज द एनडीपीएस एक्ट ऑफ 1985. ओके so ये है. Then we have got a campaign which focuses on community outreach programs such as the Nasha Mukt Bharat or Drug Free India. Also, India is a signatory with the following conventions and treaties that goes for the menace of or to go that goes for the menace of drug abuse. Supposedly, the UN Convention on Narcotic Drugs, UN Convention on Psychotropic Substances, UN Convention against illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, UN Convention against transnational organized crime. So India is directly a signatory of it. So therefore, while steps must be taken to stop supply by tamping down on cross-border trafficking and imposing harsher penalties under the NDPS Act, so we must need to address the problem of the demand side. The demand क्यों हो रहा है? आज demand है इसलिए तो supply हो रहा है वहां से. So today, though because of the stricter actions, आज तो देखते रहते हो कि हमेशा कुछ ना कुछ ड्रग्स पेडलर पकड़ा जा रहा है. So certain crop drugs which have more than 50% alcohol and opiates needs to be contained. And strict action is required from the police officers and the excise and the narcotics department to curb the problem of drug menace in our country. And ये कब होगा? जब education curriculum should also include chapters on drug addictions. So its impact and on de-addiction, proper counseling is also some of the alternatives that India needs to take to go for the menace or to tackle the menace of drug abuse. ओके तो यहाँ पे जितने भी ड्रग माफिया है जो ये सब काम करते हैं, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लेके यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं अभी. ठीक है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है कुछ भी. तो यहाँ पे बोल रहे कि क्या इम्पैक्ट है ऑफ दिस ड्रग माफियाज और दिस ड्रग पेडलर्स इन द सोसाइटी, जिसके लिए बच्चे बिगड़ रहे हैं. ठीक है, सो वी आर डायरेक्टली लूजिंग द यूथ ऑफ अ चाइल्ड. ओके तो यहाँ पे ये बोला गया. नेक्स्ट, सेंटर्स पुश फॉर नाविक सिस्टम. तो सेंटर्स पुश फॉर नाविक सिस्टम का मतलब यहाँ पे एक हम लोग का नाविक सिस्टम है. ओके which is which is also known as the navigation with Indian constellation. Okay, navik का मतलब क्या है? Navigation with Indian constellations. Okay, and today the union government is directly pushing the tech giants to make smartphones compatible with its home ground navigation system, that is navik. जैसे आजकल हम लोग अपना जीपीएस, ओके जो हम लोग का जीपीएस सिस्टम है वो इनबिल्ड आता है. तो अभी गवर्नमेंट पुश कर रहा है टू दिस टेक जायंट्स कि आप लोग नाविक को भी इनबिल्ड कीजिए. सो मैंने क्या बोला? नाविक क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कंस्टलेशन, व्हिच इज एन इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डेवलप्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. तो आज अगर मैं नाविक के बारे में सोचो तो दिस नाविक कंसिस्ट ऑफ 8 सैटेलाइट्स and covers the whole of India's landmass and up to 1500 kilometers from its boundaries. Okay, so यहाँ पे we know about that it consists of 8 satellites located at the distance of approximately 36,000 kilometers. Currently, 7 satellites are active, 3 satellites are geostationary in orbit, 5 satellites are inclined geosynchronous orbits. तो यहाँ पे देख सकते हो. Okay, ये representation है. Okay, so the main objective is to provide the relative position, navigation, and timing services over India and its neighborhood. So today, why is the center pushing for Navik? Because see, currently the Navik's use is very much limited, and it is being used in public vehicle tracking in India. Okay, so it helps providing emergency warning alerts to even the fishermen venturing into the deep sea.
and also for tracking and providing information related to natural disasters. Also, enabling it into smartphones is the next step India is pushing for, because India's 2021 satellite navigation draft policy stated the government will work towards expanding the coverage from regional to global to ensure the availability of the Navik signal in any part of the world. Okay, so how does Navik can be compared? So we can see that the main difference is the serviceable area covered by these systems. GPS caters to use across the globe, and its satellites circle the Earth twice a day, while Navik is currently for use in India and adjacent areas. Like GPS, there are three more global navigation systems. गैलीलियो किसका है? यूरोपियन यूनियन का है. रशिया क्या ओन करता है? ग्लोनस. और चाइना क्या यूज करता है? बेडो. ओके, और एक है which is operated by Japan, उसको नाम है हम लोग का QZSS. It is operated by Japan, and it is another regional navigation system covering the Asia Oceania region with a focus mainly on Japan. So therefore, today we have got a greater significance of this Navik with the aim of removing dependence on some of the foreign satellite system, and relying on systems like GPS and GLONASS may not always be reliable. Okay, and also we could see about the possibility that civilian services can be degraded or denied. So Navik is an indigenous positioning system that is under directly the Indian control or the Indian government, and there is a no risk of service being withdrawn or denied in some of the given situations. तो जैसे हम लोग को कारगिल वार के टाइम में जीपीएस का एक्सेस डिनाई कर दिया गया था, तो आज हम लोग का उस टाइम में अगर नाभिक होता तो सोच लो उस वार का हम लोग पाकिस्तान को कितने आसानी से धूल चका सकते थे. Okay, so we could have lost various less number of soldiers who died on duty. Okay, तो इसीलिए नाविक हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के लिए the government of India is directly pushing these tech giants to introduce this Navik as an inbuilt system in every smartphones. Okay, तो ये था about the news of Navik. Next पे आते हैं, रुपी फॉल रो रिकॉर्ड्स. ओके, तो आज क्या हो रहा है? रुपी डायरेक्टली यहाँ पे डेप्रिशिएशन स्टेज पे चल रहा है. Indian rupee fell to a record low versus US after the US Federal hinted at more aggressive rates. तो अभी रुपी एट अ रिकॉर्ड लो कितना पे है? 80.2. सपोजली मत लो 80 रुपया है. ओके, so today if you see about the problem associated with the currency, तो ये क्या हो रहा है? डेप्रिशिएशन हो रहा है. डेप्रिशिएशन बोलते किसको है? करेंसी डेप्रिशिएशन होता क्या है? सी, द करेंसी डेप्रिशिएशन इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी इन अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. तो आज हम लोग क्या करते हैं? डॉलर के साथ हम लोग रुपी को एक्सचेंज करते हैं, एंड दिस जब एक्सचेंज करते हैं तो उसका वैल्यू घट जाता है. ठीक है, तो करेंसी डेप्रिशिएशन इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी in a floating exchange rate. And rupee depreciation means that rupee has become less valuable with respect to dollar. And it means that the rupee is now weaker than what is used to be earlier. Okay, मैं अगर आज से कम से कम 2-3 साल के बारे में पहले बात बोलूं तो फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर 1 वाज इक्वल टू अराउंड ₹70, लेकिन आज क्या हो रहा है? 80 तक चल गया है. So their depreciation in rupee is a double-edged sword for the Reserve Bank of India. इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी है. पॉजिटिव एस्पेक्ट कैसे? Because see, agar weaker rupee should theoretically give a boost to India's export, but in an environment of uncertainty and weak global demand, a fall in the external value of rupee may not translate into higher exports. Also, if I say about the negative sector, it poses some of the risks of imported inflations and may make it difficult for the central bank to maintain interest rates at a record low for longer. Okay, today we all know that India is one of the top importers of edible oils, and a weaker currency will further escalate imported edible oil prices and lead to higher food inflations. ठीक है, तो today if you see about the reasons for the current depreciation, आज अगर मैं current depreciation के बारे में सोचूं तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? Sell off in the global equity markets, which was triggered by the hike in the interest rate by the US Federal Reserve. Also, the outflow of dollar is a result of high crude prices, and the correction in equity markets is also causing adverse flow of dollars. The tightening of the monetary policy, RBI आज क्या कर रहा है? It is tightening the monetary policy to counter a rising inflation, which has also led to the appreciation of the currency. So therefore, today we need to get, with proper analysis, we need to get this supply or this currency norms. अगर हम लोग met नहीं किए, then obviously in some point of time rupee will depreciate. So today we have to see about the cost push inflations occurs,
and also about the wages and the raw materials or the things that we are directly importing today. और आज जैसे नया बात बोल रहे हैं कि हम लोग रूपी रूबल एक्सचेंज करेंगे, ओके, आज हम लोग रूपी रियल ट्रेड करेंगे, तो ये सब एक नया फिनोमेना है टू कंट्रोल द फॉल ऑफ द रूपी। जितने हम लोग एक्सचेंज करेंगे उतना हम लोग का डेप्रिशिएट होगा। तो आज अगर हम लोग रूपी रियाल ट्रेड कर दे, तो आज हम लोग सऊदी अरेबिया के साथ कुछ करना चाहे तो ऑब्वियसली हम लोग रूपी से हम लोग पे कर सकते हैं। तो ऐसा अगर सिस्टम आ जाए देन ओनली वी कैन डायरेक्टली अप्रिशिएट आवर रूपी। ओके, तो ये था अबाउट द रूपी फॉल रिकॉर्ड लो। ओके, नेक्स्ट, नासा अबाउट टू क्रैश इनटू एस्टेरॉइड। ओके, तो ये एक छोटा सा, इतना लाइक बिग टॉपिक नहीं है क्योंकि अभी तक ये इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तो वी कुड सी अबाउट दैट, ये बोला गया है अबाउट द लॉन्च ऑफ इट्स मिशन व्हिच इज नोन एज डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग डार्ट, डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो ये क्या है? इट इज द फर्स्ट काइनेटिक इम्पैक्ट मेथड ऑफ प्लैनेटरी डिफेंस वेयर अ डर्ट स्पेसक्राफ्ट विल बी कोलाइडिंग विद द एस्टेरॉइड्स डाइमॉर्फोस। तो इसका नाम दिया गया है एक एस्टेरॉइड का, ओके, उसका नाम दिया गया है डाइमॉर्फोस। ओके, इसके साथ कोलाइड करेंगे। And this kinetic impactor method includes sending one or more large high-speed spacecraft into the path of an approaching near Earth objects, and this could deflect the asteroid into a different trajectory, steering it away from the Earth's orbital path. Okay, तो ये एक issue है यहाँ पे एक बात बताया गया है कि about this mission, we have to go ahead with this mission so that we have to make this DART is a very low-cost spacecraft, and it has 2 solar arrays and use some of the propellant for maneuvering the spacecraft. Okay, so यहाँ पे हम लोग क्या क्या carry करते हैं? It also carries a 10 kg of xenon, which will be used to demonstrate the agency's new thruster called the NASA Evolutionary Xenon Thruster. Okay, फिर हम लोग यहाँ पे एक combination of performance and spacecraft integration capabilities को लेके आए हैं robotic missions के द्वारा. Okay, then we can see a high resolution imager जो capture करेंगे इसके pictures. Okay, also it has got a small satellite or CubeSat. ओके इसको बोलते हैं हम लोग लिसिया क्यूब, LICIA, लिसिया क्यूब। लिसिया क्यूब मतलब लाइट इटालियन क्यूबसेट फॉर इमेजिंग ऑफ द एस्टेरॉइड्स। ओके, सो ये क्या करेंगे? इट इज एबल टू कैप्चर द इमेजेस ऑफ द इम्पैक्ट एंड द इम्पैक्ट क्रेटर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिशंस। तो इसका मेन मकसद क्या है? द मिशन इज टू टेस्ट द न्यू टेक्नोलॉजी टू बी प्रिपेयर्ड इन केस एन एस्टेरॉइड हेड्स टुवर्ड्स अर्थ इन द फ्यूचर। ओके, तो ये मेनली वो मिशन है which needs to be very much of precise. नहीं तो अगर precise नहीं होगा then it will be totally a failure of the NASA. Okay, so it is क्या है? ये directly एक suicide mission है इसका, suicide mission है, and the spacecraft will be completely destroyed after this. ऐसा नहीं है कि spacecraft फिर वापस धरती पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? ये directly यहाँ पे अगर टक्कर मार दे, ये इसको इसका रूट चेंज कर दे और ये उसके बाद totally destroy हो जाएंगे. So therefore it is a suicide mission and the spacecraft will be completely destroyed. ओके, तो ये यहाँ पे ये डिस्कस किया गया है डार्ट मिशन। नेक्स्ट, लास्टली एडिटोरियल, पिचिंग इंडिया एज अ डेस्टिनेशन। तो ये टूरिज्म सेक्टर के बारे में बात बोला गया है बिकॉज अभी रिसेंटली 27 सितंबर को क्या था हम लोग का? 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे था। ओके, एंड दिस टूरिज्म डे, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मीटिंग ऑफ टूरिज्म मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स वाज हेल्ड इन द धौलाधार रेंजेस ऑफ द हिमालयस. And the discussions, debates, and deliberations took place on topics like modes and mechanisms to develop the India's tourism sector. तो यहाँ पे जो जी किशन रेड्डी जी है, who is the Union Minister of Tourism, Culture, Development of the North Eastern Region, okay, तो ये यहाँ पे एक तर्क बताते हैं कि how we can develop the tourism after the COVID pandemic. Okay, because the Prime Minister of India on Independence Day of 2019 requested Indian citizens to travel to at least 15 tourist places in India by the year 2022. However, this could not be realized owing to the pandemic of COVID. And during the time of the COVID pandemic, we know how this tourism sector has severely getting affected. So the outcome of the meeting was the Dharamshala declarations. And Dharamshala declaration, during inspiration from the Prime Minister's approach, whole of government, it enables the breaking down of silos and encourage synergies across various corridors. So what was the objective of this Dharamsala declaration? It is to realize India's role in global tourism and focus on the recovery of the sector by nurturing domestic tourism. Okay, so यहाँ पे हम लोग का बहुत सारा measures लिया गया है. Today, if I see about the measures to boost the tourism sector, हम लोग का यहाँ पे emergency credit line guarantee scheme of the Indian government, which recently was increased to 5 lakh crore, पैसा दिया गया है. National tourism policy है हम लोग का, which main objective is to improve the conditions of tourism development, support tourism industries.
strengthen support functions, develop subsectors of tourism. So in will also provide some of the skill opportunities through tourism and hospitality sector skill missions. और यहाँ पे पीपीपी मॉडल का बात बोला गया है, public private partnerships. So today India has got a higher potential in tourism, and India has got a golden opportunity as a major tourist destination under the backdrop of the G20 presidency the next year. So India's traditional dictum of Atiti Deva Bhavo can be put forth while welcoming delegates from the 19th century, 19 countries and the European Union while hosting the 200 meetings. So अभी यहाँ पे हम लोग को collaborate करना चाहिए with other departments and ministries to bring necessary interventions like visa reforms, traveler friendly, improve immigration facilities. ये सब करना चाहिए. And by mid of 2024, India's tourism sector will reach pre-pandemic levels. Okay, achieving approximately around $150 billion contribution to the GDP. So today we know about that India's tourism sector can be projected to a growth rate of around 7 to 9%. तो ये करना है हम लोग को. अगर ये सब करेंगे, then only we could see that the tourist arrivals may reach more than 25 million in a year, जो आज बहुत कम हो गया है. ठीक है. So therefore in the very end or in the very conclusion stage, हम लोग ये बता सकते हैं कि सी इंडिया हैज अ रिच कल्टिवेशनल और सिविलाइजेशनल ethos of the sustainable, inclusive and responsible tourism. And it is evident from multiple reiterations by great personalities even like Gautam Buddha and Mahatma Gandhi, who have strongly advocated the principle of harmonious living with the nature. And India should renew these pledges to position itself as the best travel destination in the world by 2047. तो ये अगर हम लोग कर ले, तो therefore India could be the next destination of every people, for every citizen of any country wanting to visit the country of India. Okay, और यहाँ पे हम लोग का मेजर फोकस क्या रहेगा? द हिमालयन स्टेट्स, द नॉर्थ ईस्ट, द कोस्टल स्टेट्स. तो ये सब हम लोग का ज्यादा फोकस रहेंगे, बिकॉज इन दिस एरियाज वी कैन सी हार्डली mainly the Himalayan as well as the northeastern areas. We can hardly see the population or the tourist from the other countries are directly going and visiting. तो ये हम लोग को ज्यादा फोकस एरिया रहेगा. ओके, और एकदम ज्यादा से ज्यादा फोकस एरिया के बारे में बोलो तो इट इज डायरेक्टली द नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो इनफ्लो ऑफ फॉरेन टूरिस्ट है वो एक्सट्रीमली लो है. तो इसी के द्वारा हम लोग अपना टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एडिटोरियल. ओके, सो देयरफॉर इट एंड्स ओवर हियर. सो यहाँ पे 5 MCQs दिया गया है, ये आप लोग attempt कर लीजिएगा. One mains question is there. Okay, to attempt that, to join our WhatsApp channel through the link given below, and also the Telegram channel through the link given below. So that's all for today. Thank you and Jai Hind.